हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिव्य पाठशाला ओडिशा। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा कंप्यूटर मेमोरी र समस्त थ्योरी एवं प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलंतु संग माने आज क्लास को आमे स्टार्ट करिबा। Computer memory is the storage area used to store data and instructions temporarily or permanently. Computer memory ହେଉଛି ଗୋଟେ storage area जोटा डाटा स्टोर करिया पई व्यवहार करा जाय थाए। डाटा टेम्पोरारी हो किंबा परमानेंट डाटा हो। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी दुई प्रकार यथा प्राइमरी मेमोरी एवं सेकेंडरी मेमोरी। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी मध्य कुहा जाय थाए। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू। यह सीपीयू सहित डायरेक्टली कनेक्टेड थाए। प्राइमरी मेमोरी इज फास्ट बट लिमिटेड इन साइज। साइज रे छोट थाए किंतु प्राइमरी मेमोरी अन्य मेमोरी गुडा ठारू फास्ट। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दुई प्रकार यथा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी रो किछि फीचर्स अछि यथा हाई स्पीड, स्मॉल कैपेसिटी एंड हाई एक्सपेंसिव। व्हाट इज रैम? रैम रो फुल फॉर्म होछि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रैम होछि प्राइमरी मेमोरी रो गोटे टाइप यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पोरारीली। डाटा एवं इंस्ट्रक्शन को टेम्पोरारीली स्टोर करिया पई व्यवहार करा जाय थाए व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। रैम रो की फीचर्स होछि भेरी फास्ट मेमोरी। रैम गोटे फास्ट मेमोरी। रैम रीड एंड राइट मेमोरी। रैम volatile memory. It helps CPU to work faster. Types of RAM. SRAM static RAM and आउटे होछि DRAM dynamic RAM. वर्तमान आमे SRAM एवं DRAM मध्यरे केतेटा डिफरेंस देखिबा। यूजेस फ्लिप फ्लॉप सर्किट और ट्रांजिस्टर। SRAM रे फ्लिप फ्लॉप सर्किट और ट्रांजिस्टर रो व्यवहार करा जाय थाए जेतेबेले DRAM रे कैपेसिटर रो व्यवहार करा जाय। SRAM very fast but DRAM SRAM ठारू टिके slower. SRAM is expensive but DRAM is cheaper. SRAM no need to refresh but DRAM needs proper refreshing. SRAM used in cache memory but DRAM is used in main memory. ROM रो full form होछि read only memory. ROM is a type of primary memory that stores data permanently. ROM होछि प्राइमरी मेमोरी जहा की डाटा को परमानेंटली स्टोर करी की रखे। की फीचर्स ऑफ ROM? ROM is a permanent storage. Data does not delete when power off. पावर ऑफ हे गले मध्य डाटा डिलीट हुए नाही, डाटा सेव हे की रहे। एणु यहा को नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोली कुहा जाए। ROM इज ए परमानेंट स्टोरेज। एथिरे डाटा केबे मध्य डिलीट हुए नाही। मोस्टली रीड ओनली। ROM रे आमे मोस्टली रीड ओनली होई थाए एंड कैन नॉट इजीली मॉडिफाई। ROM stored BIOS and firmware. एबे आमे जानिबा टाइप्स ऑफ ROM विषय रे। ROM मुख्यतः तीन प्रकार। नंबर 1 PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जहा की मात्र थरे राइट करी हुए। कैन नॉट बी चेंज लेटर। थरे राइट करि सरला परे यहा को आ चेंज करी हुए नाही। एवं यूज्ड वेयर डाटा इज फिक्स। डाटा जोठी फिक्स रहे सेहीटी PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रो व्यवहार करा जाय। 2 नंबर होची EPROM erasable programmable read only memory can be erased using UV light. UV light द्वारा या को इरेज करी हुए एवं can be reprogrammed एवं reprogram करी हुए। used in older systems पुराना सिस्टम गुडा करे यह व्यवहार करा जाउथिला। 3 नंबर होची double EPROM electrically erasable programmable read only memory can be erased using electrical signal। यह को इलेक्ट्रिक सिग्नल द्वारा इरेज करी हुए एवं इजीली रीरिटन एवं इजीली रीराइट करी हुए। यूज्ड इन मॉडर्न डिवाइसेस। मॉडर्न डिवाइस गुडा रे आज रो डिवाइस गुडा रे एई डबल EPROM रो व्यवहार करा जाय यथा बायोस मेमोरी कार्ड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वर्तमान आमे रैम और ROM भितरे केतेटा डिफरेंस देखिबा। रैम रो नेचर होची वोलेटाइल जेतेबेले ROM होची नॉन वोलेटाइल। रैम रो डाटा टेम्पररी डाटा हेले ROM रो डाटा होची परमानेंट डाटा। रैम फास्टर थाए देबले ROM होची स्लोअर। रैम रे आमे रीड एंड राइट करथाऊ बट ROM रे मोस्टली इट यूजेस टू रीड रनिंग प्रोग्राम्स रैम एंड बूटिंग और बायोस ROM।
Secondary memory. Secondary memory is also called external memory, not directly connected to CPU. यह CPU सहित directly connected हेई न थाए, used for long term storage ଆଉ ଏହା long term storage ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇଥାଏ। एग्जांपल होची हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD और DVD, SSD। फीचर्स होची लार्ज स्टोरेज, आमे असंख्य डेटा एठी स्टोर करी रखि परिबा। स्लोअर देन प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी ठारू यह स्लोअर होइथाय एवं नॉन भोलाटाइल होइथाय, अर्थात पावर ऑफ हेले मध्य डाटाटा डिलीट हुए नहीं, सेव हेकी रहिथाय। एबे क्वेश्चन नंबर 1 अछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए भोलाटाइल मेमोरी। यह ओडब्ल्यूएससी रो बीएसएसओ 2022 रे एग्जाम रे आस्थिला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए भोलाटाइल मेमोरी। ऑप्शन 1 रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी सीडी रोम। राइट आंसर होची ऑप्शन सी रैम। नेक्स्ट, व्हाट इज भोलाटाइल एंड नॉन भोलाटाइल। डाटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, भोलाटाइल मेमोरी थिले जेतेबेले पावर ऑफ हो जाए डाटा लॉस्ट हो जाए, यह टेम्पोरारी मेमोरी थाए। भोलाटाइल मेमोरी उटे टेम्पोरारी मेमोरी, किंतु भोलाटाइल मेमोरी इज फास्टर देन नॉन भोलाटाइल मेमोरी। भोलाटाइल मेमोरी को आमे प्रोसेसिंग रे यूज करथाऊ। एग्जांपल होची भोलाटाइल मेमोरी रो रैम। नॉन भोलाटाइल मेमोरी होची डाटा रिटेन्ड विदाउट पावर, पावर कट हैला परे भी डाटाटा रिटेन्ड हेगी सेव हेकी रही थाए। आउ यह गोटे परमानेंट मेमोरी। नॉन भोलाटाइल मेमोरी होची एक परमानेंट मेमोरी बट स्लोअर देन भोलाटाइल मेमोरी, यूज्ड फॉर स्टोरिंग, जहाँ भी सेव करिया पई, जहाँ भी डाटा इंस्ट्रक्शन सेव करिया पई आमे नॉन भोलाटाइल मेमोरी व्यवहार करथाऊ। यार एग्जांपल होची रोम, एचडीडी, एसएसडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Now, question number 2, which memory loses its contents when power is switched off? Option A, ROM, option B, RAM, option C, hard disk, option D, CD-ROM. The right answer is option B, RAM. এই কোশ্চেনটা OSSSC ର RI 2021 एग्जाम रे आस्थिला। Question number 3, which of the following is the fastest memory in a computer? Computer रे सबुठारु fastest memory कोउटा? Option A RAM, option B cache, option C register, option D ROM. Right answer होची register, option C। वर्तमान आमे विभिन्न प्रकार मेमोरी एवं तार लोकेशन एवं ता स्पीड विषय रे जानिबा। प्रथमे अछि रेजिस्टर। रेजिस्टर मेमोरी कोठी थाए, यार लोकेशन होची इनसाइड सीपीयू, यह सीपीयू भितरे थाए एवं यार स्पीड होची फास्टेस्ट। एटा जेते भी मेमोरी अछि समस्तंक मध्यरे एई मेमोरी होची फास्टेस्ट। नेक्स्ट 2 नंबर अछि कैच मेमोरी। कैच मेमोरी सीपीयू एवं रैम मध्यरे थाए एवं यह एक बफर मेमोरी भलिया काम करे एवं यार स्पीड होची वेरी फास्ट बट स्लोअर देन रजिस्टर। नेक्स्ट रैम, रैम थाए मदरबोर्ड रे एवं यार स्पीड होची मॉडरेट। देन एसटीडी एंड अदर एक्सटर्नल स्टोरेज सबु एक्सटर्नली से थाए सिस्टम रे एवं यार स्पीड बाकी मेमोरी तुलना रे स्लो थाए। कैच मेमोरी is located between which of the following? Option A CPU and RAM, option B RAM and ROM, option C hard disk and RAM, option D CPU and hard disk. Right answer होची option A CPU and RAM. Next question, which of the following is an example of non-volatile memory? Option A RAM, option B cache, option C ROM, option D register. Right answer होची option C ROM, read only memory. Up next question, BIOS, BIOS, BIOS is stored in which memory? Option A RAM, option B ROM, option C cache, option D hard disk. Right answer होची option B ROM. BIOS, basic input output system. BIOS is a firmware program. यह होची गोटे firmware program that is stored permanently in the computer, जहा कि कंप्यूटर रे permanently store हेकी रखि थाए and is responsible for starting the computer, एवं यह कंप्यूटर को स्टार्ट करिवारे सहाय्य करे। It is the first software that runs when you turn on the computer. आमे जेतेबेले कंप्यूटर को ऑन करि थाउ BIOS होची फर्स्ट सॉफ्टवेयर जहा कि स्टार्ट हेई थाए। Where is BIOS stored? BIOS is stored in ROM. BIOS ROM रे स्टोर हेई थाए, काहे कि डाटा does not lost
when power is off ROM रे जेतेबेले आमे ROM रे कोनोसी डाटा रखिबा पावर ऑफ हेले सेटा लॉस हेई न थाए एणु जेतेबेले आमे बायस सब बेले रहिबा कथा बायस स्टार्ट हेया पई कंप्यूटर को सहाय्य करे सेहिथि पई बायस सब बेले कंप्यूटर सिस्टम रहिबा कथा पावर ऑफ थाउ किंबा पावर ऑन थाउ एणु बायस टा ROM रे सेव हेगी थाए SRAM is faster than which of the following? Option A DRAM, option B ROM, option C hard disk, option D cache. SRAM is faster than right answer होची option A DRAM. Next question. What is the full form of double EPROM? Double EPROM रो full form होची option A electrically erasable programmable read only memory, option B easy erase ROM, option C extended ROM, option D none. Right answer होची option A electrically erasable programmable read only memory, option A. 1 kilobyte 1 KB is equal to option A 1000 byte, option B 1024 byte, option C 512 bytes, option D 2048 bytes. Right answer होची 1024 bytes. Option B is the right answer. Which of the following is an example of secondary memory? Option A RAM, option B cache, option C hard disk, option D register. Right answer होची option C hard disk. Which of the following is not a primary memory? Option A RAM, option B cache, option C SSD, option D register. Right answer होची option C SSD solid state drive. Dynamic RAM DRAM uses which component to store data? Option A flip-flop, option B capacitor, option C register, option D transistor only. Right answer होची option B capacitor. DRAM uses capacitor. Static RAM use which component? Option A capacitor, option B flip-flop, option C disk, option D none. Right answer होची flip-flop circuit. Which memory requires refreshing? Which memory requires refreshing? Option A SRAM, option B DRAM, option C ROM, option D cache. Right answer होची option B DRAM. RAM is also known as option A secondary memory, option B main memory, option C auxiliary memory, option D external memory. Right answer होची option B main memory. RAM is also known as main memory. Which of the following is permanent memory? Option A RAM, option B cache, option C ROM, option D register. Right answer होची option C ROM. Which storage device has no moving parts? Option A HDD, option B SSD, option C CD-ROM, option D floppy disk. Right answer होची SSD, option B. Register are located in which of the following? Register कोठी located ହେଇକି ରହିଥାଏ option A RAM, option B CPU, option C hard disk, option D cache. Right answer होची option B CPU. Virtual memory is associated with which of the following? Option A RAM, option B hard disk, option C cache, option D register. Right answer होची option B hard disk. Which of the following improves system performance? Option A ROM, option B cache memory, option C hard disk, option D CD-ROM. Right answer होची option B cache memory. Question 21. 1 megabyte or 1 MB equals to option A 1024 KB,
ऑप्शन बी 1000 KB, ऑप्शन सी 512 KB, ऑप्शन डी 2048 KB। राइट आंसर होची 1024 KB, ऑप्शन ए। 1 gigabyte 1 GB equals to option A 1024 MB, 1000 MB, option C 512 MB, option D 2048 MB। right answer होची option A 2000 1024 MB। Which memory is closest to CPU? Option A RAM, option B cache, option C hard disk, option D SSD। Right answer होची option B cache memory। Which of the following is temporary memory? Option A ROM, option B RAM, hard disk, option D CD-ROM। Right answer होची option B RAM। Which of the following is used for booting? Option A RAM, option B ROM, option C cache, option D hard disk। Right answer होची ROM। Thank you friends. Thank you for watching my video and I hope you have understand all of this and thank you। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।